some of your team members coming in. वो दो टीमां आ रही ने पिछों. This is the first time I'm seeing them. But आज थोड़े हाले टीम्स आ रही ने. आगे सारे पिछों. इस मीटिंग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद मैंने पता तुम समझते हो कि इट शुड बी अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू पार्टी, लेकिन मैं कुछ और कहना चाहना हूँ. बड़ी देर तो मैं सुन रहा जब दरवाजे खुदा. तो ये जड़ा अज शुरुआत मैं करना चाहना, it is basically on what I have been seeing ever since my government went a month ago. We have, in the course of these 4.5 years that I was there, here are all the papers. I am giving you each except ताकि तुसी सारे अपने आप at your leisure तुसी इसनू पढ़ सको. Fact is कि this is our manifesto of, and this manifesto is what we have achieved right through. A manifesto again is another copy, and ये अपने पंजाबी दे विच है, मनोहर पत्थर ये दे विच है. और then manifesto पंजाब वास्ते वो दे विच copy है. Now what we have done, we have put them into one, and each one of you will be getting one of these. कि सारा मैनिफेस्टो की सी की प्राप्तियां कीतियां ने, जो मैनिफेस्टो दे विच नहीं सी वो की प्राप्तियां कीतियां ने. Other than that, in the manifesto, it is कर रहे हैं. any in honesty, non-honesty to say कि ਜਿਹੜੇ प्रोग्राम ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇ ਕਦੋਂ ਹੋਏ. जो मनो साडा मैनीफेस्टो का प्रोग्राम 500 तकरीबन पॉइंट से we have done 92% during my period. 10 मैनीफेस्टो के प्रोग्राम्स कवर नहीं हो सकते linked with VAT. So उन्होंने किसी कर दे बच्चों. Otherwise, my government was to end, which was March. Everything would have been completed. Even now, I am sure those programs are शुरू किए नहीं, they are continuing. But to say, and I don't want to name the minister, to say कि 4.5 साल में कुछ नहीं होया जी, हुण चलो कैप्टन साहब हुण लगे ने किसानां दा मदद करन लई, वही बहुत है. हुण these are petty, small, unnecessary statements made by people who are part of the cabinet, even in my cabinet. Anyway, I am not going to name people. Things that मैं तुम्हें दसना चाहता सी. Any day to देख रहे हैं 18 point program, this is no program at all. These are issues which have been taken from the manifesto. इन विचों कट के लाइयां ने सी जेडी मैनीफेस्टो दे विच 18 point program मैनू भेजा बनाया गया सी दिल्ली द खरगे कमेटी. उन्होंने विच मैं मिल के उन्होंने 18 point program पढ़ के सुना के मैं कहा है प्रोग्राम केयर एंड आ है साढ़े जेड़े असी इन्हों की प्राप्ति की है.
All 18 points are there. Then they say, what is the point? I said, how do I know? You are the people who should be knowing. You are the one who's asking me these questions. उसके बाद खड़गे एंड सोनिया गांधी जी साडे प्रेसिडेंट से उदों और उन्होंने नाल बह के मैंने बुलाया सी आही मैं इन्होंने क्या so then they say what is the problem I said there is no problem you are the one who are doing this so these 18 points all have been completed were completed during the process which is in this from the management festival which is going on so everything is there. Please look into it and see what we have achieved. Printed separately, but it's got all the details that you would be requiring. The amount of we have on each district, I want you to know, this is fund requirement for link roads, bridges and culverts, grants from cattle fairs, rural grants, road scheme, HUDCO, everything under the sun, and here it is again, continuation. Either which things like smart school, Sarv Sikya, we have spent very and we've done it. And this is done during my period. For instance, on one occasion, water supply, etc. And this is here. The ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ these are other issues which have been broken up. No, we've broken them up so that they are on separate things, but they are all there for you to see. My point of just saying is that look, we have done a lot of work. We have कोई गल नहीं ऐसी छड़ी पंजाब दे विच ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ नहीं की चाहे सड़कों दी होण चाहे रिपेयर्स होण चाहे जो मर्जी हो इंडस्ट्री मेरा टारगेट सैट किया सी कि मैं 1 लाख करोड़ रुपये की इंडस्ट्री लाना चाहना पंजाब के विच बिकॉज दो आप एग्रीकल्चर स्टेट हैं इंडस्ट्री बगैर नहीं चल सकता वी आर मॉडर्न वर्ल्ड नाउ और मॉडर्न वर्ल्ड के आपां इंडस्ट्री बगैर जिते नौकरियां होण जिते इकोनॉमी जनरेट होए जिते टैक्सेशन कम्स टू दी एक्सचेकर वगैरह सारिया चीज़ां उहदे नाल संबंधित सी एंड आई एम हैप्पी टू से that जदों मैं सरकार छड्डी वी हैड ऑलरेडी डन नियरली 96,000 crores and I think जब तक साल मुकूगा लाख करोड़ को ऊपर तक जाएंगे it is a sign, a good sign कि Punjab is a destination for industry. I have got the biggest houses of Punjab, of India जिन्होंने आके अपना पैसा उधर लाया. We've got it in the education field, the Ashoka University होए, Amity University होए, जिहड़ियां होण and in addition to this all the leading houses of India have come, and I think today, tomorrow they are having another session, with which hopefully some more money will come to Punjab. So, ये सारी efforts here, which we have proven, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰ ਸਕੇ. So I hope that in the due course this will go on. Now my concern, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਕੌੜਾ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ, about security measures. Now look, my basic training is that of a soldier. I have been 10 years in the service from my training period to the time I left the army. So I know the basics. On the other hand, 9.5 साल मैं इस पंजाब का Home Minister here, and I've had all the sensitive issues were under me, whether it was intelligence or whatever it was.
And somebody who's been Home Minister for 1 month seems to say he knows more than I know, which I have known for 9.5 years, plus my training. I want to show you something. Nobody wants a disturbed Punjab. We must understand we have been through very difficult times in Punjab. ਅਸੀਂ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਗੜਬੜ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 1962 ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫੋਰਸਿਸ ਗਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਈਵਨ ਇਨ 48 ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਵੀ ਹੈਡ ਦ ਟਰਬਲ ਆਫ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। You have seen Punjab has suffered. I don't want Punjab to suffer. Therefore, it is my duty, was my duty as Chief Minister to issue, see what is, ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ, that we have to work together to resolve this. Because ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ border ਹੈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, it is also India's border, it is also my border. And when people are now, when people talk, whether it is all party or anybody, they must be given the proper briefing. I don't know whether they are given briefing or not. But I have the figures here of from day या उसको पहले निकालना तार के नीचे बना के हेरोइन हो या कुछ कर लेंगे सी विच। वो तो बाद फिर कदे कदे जब नदियां का पानी डाउन सी बरसात तो बाद उदों उतों नदियां के उपर भी आ जाते सी।